So good morning to everyone. In the previous classes, we have seen that about the what is multiplexing concept. We have seen that multiplexing is basically what? This is the technique that allows simultaneous transmissions of multiple signals across a single link. That means all the multiple signals from the devices we get, all the signals. Now, these signals, multiple signals should be transmitted over a single link because there is a single link present. So through this single link, through this single link, the our signals will be transmitted, and in the receiver end what it will be, there is in the receiver end there is a demultiplexer present which will convert this composite signal into the original form, and for intended devices the signals will go to the intended devices. That means in the sender side there is what, in this side there is a multiplexer present, there is a multiplexer present. So what this multiplexer will do, this multiplexer will all the signals coming from different devices, this will make these signals into a composite signal, and through the single link, through the single data link, through this composite signal will pass, and there will be a demultiplexer present. What this demultiplexer will do, this will do this composite signals, it will be, these composite signals will be breaked and it will be goes to the intended devices. So this is the form of the multiplexing. And what we have seen that in the multiplexing there are two types of multiplexing, that is for analog and digital. And inside the analog there is FDM and WDM. These two are in the analog FDM, that stands for frequency division multiplexing, and WDM, wavelength division multiplexing. And for digital it is what, in the digital there is TDM, that is time division multiplexing. So today we will see about the FDM, WDM and TDM, the concept of all of this we will see. So first, the frequency division multiplexing. So we know that frequency division multiplexing is an analog, because we have seen that in analog, and there is two types, analog and digital, and inside the analog there is FDM and WDM present. So that means FDM is what? FDM is of analog, and analog techniques applied. So here we can see that this analog techniques applied when the bandwidth of the link is greater than the combined bandwidth of the signal. So for this techniques will be applied that when the bandwidth of the link, when the link bandwidth is greater than the combined bandwidth of the signal. So this techniques will be applied when our link bandwidth will be greater than the combined bandwidth of the signal. So this analog techniques will be applied. Analog techniques means what? We know that analog techniques means normal sine wave transmission. So for normal sine wave transmission, this analog techniques will be used. Now, if we consider that we have to send 4-5 signals, so we have already 4-5 signals present, but individual signals bandwidth means all the signals that are present, all the signals bandwidth, individual bandwidth is much higher. So in that case, what we do, in that case, we combine all those signals. All the signals are present there. What we will do, we will combine those all signals. That means we can make them as a composite signals, so that here the bandwidth will be the particular as a same. And the available bandwidth of the communication channel is shared among the multiple users. So there will be the multiple users present, and the available bandwidth, the bandwidth which is available is shared among all the multiple users. And the carrier bandwidth is divided into sub-channels of different frequency width, and each channel is allocated to user. So now we will see it through a diagram, then it will be more clear to you that if we take here that there is a frequency, there is a graph, there is a frequency, and there is the, in this, there is a time slot. So
the frequency, or we can say the bandwidth. The bandwidth is divided into parts. Now, there are 4 users present. Here, there are 4 users present. And you can see 4 users, user 1, user 1, user 2, user 3, and user 4. So, all are sending signals. All are sending signals. And for each signal, there is a particular bandwidth. So for user 1, this is the particular bandwidth of the signal. This for user 2, this is the particular bandwidth. So same as that, this is the particular bandwidth for user 3, and this is the particular bandwidth for user 4. So that means all users, here you can see all users, user 1, user 2, user 3, user 4 are what, using the same common channel. तो हम लोग का जो channel है means the channel which you are using for the transmission, that is the link for transmission. All of the users are what, all of the users are sharing same common channel at same time. तो हम लोग का क्या है कि यूजर्स, जितना मल्टीपल यूजर्स है, मल्टीपल यूजर्स क्या कर रहे हैं, सेम चैनल जो है, सेम चैनल को यूज कर रहा है सेम टाइम में. यही हो रहा है कि सेम टाइम में क्या है, हम लोग का all users are using same common channel, but they are allotted to the different frequency. Because here you can see for user 1 this frequency is used, for user 2 this frequency is used, same as user 3 this frequency is used, and for user 4 this frequency is used. Means they are using same common channel, but they have different allotted different frequencies for, but they are using same channel, and also this what, in the same time, in the same time they are using same common channel. Only the difference is what, they have been allotted different frequencies. So to prevent why this, so other frequencies have given, different frequencies are given, these different frequencies are given for any kind of signal interferences. These different frequencies are given for any of the signal interference. Single interference means that one signal overmatched, or we can say signal interference. तो मतलब क्या है कि एक सिग्नल दूसरे सिग्नल से क्या है, ओवर, उस पर इंटरफेयर नहीं करेंगे. तो हम लोग क्या है, ऐसे उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या है, डिफरेंट बैंडविड्थ दिए है, डिफरेंट बैंडविड्थ दिए है. ऑल जो है ऑल सिग्नल्स को हम लोग क्या है, डिफरेंट बैंडविड्थ एलोकेट किए हैं इसीलिए. एंड दिस बैंडविड्थ इज डिवाइडेड अमंग यूजर्स. नाउ दिस, ये जो है देखो, अलग अलग यूजर के लिए क्या है, अलग अलग बैंडविड्थ है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है, बट उसका के लिए क्या है कि सेम कॉमन चैनल है, और उसमें क्या है, सिग्नल उस टाइम में जाएगा. तो मतलब क्या है, सेम कॉमन चैनल एंड सेम टाइम, but only the difference is what, different bandwidth is allocated for different users. So there is a possibility of crosstalk. We know that when we are discussing the, in the case of transmission media, that is twisted pair cable, that crosstalk, for that crosstalk, the crosstalk we have discussed there. So crosstalk means what, it is the leaking of signal or the interference of signal to one another. So this is what happens. There is a possibility of crosstalk in FDM since all the signals are transmitted in the same time. इधर क्या हो रहा है कि सब सिग्नल्स जो है, सब सिग्नल्स सेम कॉमन चैनल जो है, सेम कॉमन चैनल यूज करके सेम टाइम में हम लोग भेज रहा है. तो इसमें क्या है, पॉसिबिलिटी है क्रॉस टॉक का, कि एट ए टाइम सिग्नल इंटरफियरेंस हो सकते हैं. सिर्फ क्या है इधर हम लोग का कि डिफरेंट बैंडविड्थ सिर्फ हम एलोकेट किए और कुछ नहीं किए, सिर्फ डिफरेंट बैंडविड्थ जो था, डिफरेंट बैंडविड्थ को हम लोग एलोकेट किए बस. But they are using same common channel at same time, so there may be the possibility of signal interference. So this is what our FDM, frequency division multiplexing. Now next type is what, TDM. Next type is of TDM. So what is TDM?
TDM is basically time division multiplexing. Now, some changes happened for TDM. So what changes we have done for TDM? Here you can see there a time slot is given for all the users. There are users same as that for FDM what we have seen. There are user 1, user 2, user 3 and user 4. So there are 4 users present. But you have see that we have divided them into the time slot. So that means what? When user 1 this time slot, in this time slot user 1 will use all the bandwidth. You can see user 1 is using all the bandwidth. In next time slot user 2 is using all the bandwidth. After that, in the third time slot user 3 will what? Use the all bandwidth. And in case of fourth, the user 4 will use the all the bandwidth. तो इसमें देखो क्या था, उधर हम लोग का क्या है कि सेम टाइम में हो रहा था, सेम टाइम में, बट इधर क्या है हम लोग उसको क्या है टाइम स्लॉट में डिवाइड कर दिए. अब टाइम स्लॉट में क्या है कि फर्स्ट टाइम जो होगा, फर्स्ट टाइम स्लॉट में क्या होगा, फर्स्ट यूजर उसको यूज करेगा. अब देखो उसमें हम लोग डिवाइड किए थे, बैंडविड्थ को डिवाइड किए थे, बट इधर क्या है कि हम लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम स्लॉट में यूजर 1 फुल बैंडविड्थ, चैनल का जो फुल बैंडविड्थ है उसको यूज करेंगे. सेकेंड टाइम स्लॉट में क्या है कि उस टाइम स्लॉट में हम लोगों का सेकेंड यूजर जो है उसका जो सिग्नल से वो टोटल बैंडविड्थ को यूज करेगा. आफ्टर दैट थर्ड टाइम स्लॉट में क्या है कि हम लोग का थर्ड यूजर जो है वो क्या करेगा, फुल बैंडविड्थ जो है, फुल बैंडविड्थ ऑफ दैट चैनल will be used by user 3 signal. Then after that user 4 signal it will what, it will do, it will use the full bandwidth. So इधर क्या है कि हम लोग का बैंडविड्थ ऐसे डिवाइड हम लोग नहीं किए हैं, हम लोग पूरा जो है हम लोगों का सिग्नल्स जो है उसको हम लोग परमिशन दे रहे हैं कि इस टाइम में टोटल बैंडविड्थ को यूटिलाइज करें. तो यही है हम लोगों का टीडीएम कॉन्सेप्ट. टीडीएम कॉन्सेप्ट. नाउ इन टीडीएम द कंप्लीट चैनल बैंडविड्थ इज एलोकेटेड टू वन यूजर. उधर क्या था, हम लोग बैंडविड्थ जो था उसको डिवाइड कर दिए थे, बट इधर क्या है कि इन टीडीएम द कंप्लीट चैनल बैंडविड्थ इज एलोकेटेड टू वन यूजर फॉर द फिक्स्ड टाइम स्लॉट. दैट मींस each user can use the full bandwidth available, but for a fixed time, means its own time slot. So the division among users on time. So what will happen? तो हम लोग का इधर से क्या हो सकते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके बताओ कि क्या हो सकते हैं. एफडीएम में क्या था, एफडीएम में हम लोग क्या करते थे कि उसका फ्रीक्वेंसी जो था या बैंडविड्थ जो था, चैनल का बैंडविड्थ, तो चैनल का बैंडविड्थ हम लोग डिवाइड कर देते थे. और चैनल का बैंडविड्थ डिवाइड करने से क्या होता कि सेम टाइम में जो था, सेम टाइम में मल्टीपल सिग्नल्स को हम लोग, उधर क्या था टाइम स्लॉट का भी डिवीजन नहीं था और हम लोग बैंडविड्थ जो था उसको डिवाइड कर दिए थे. तो इसमें क्या है कि सिग्नल इंटरफेरेंस का पॉसिबिलिटी ज्यादा होता था कि उसमें क्रॉस टॉक हम लोगों का, तो इसीलिए क्या है क्रॉस टॉक हम लोगों का पॉसिबल हो जाते थे. बट टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में वो जो सिग्नल्स है, यूजर वंस का जो अगर फर्स्ट सिग्नल्स जो है वो क्या है पूरा चैनल का बैंडविड्थ को यूज करेगा, देन यूजर 2 करेगा, देन यूजर 3 करेगा, देन यूजर 4 करेगा. तो इसमें क्या है possibility of the crosstalk is less because there is dedicated for a time slot, there is dedicatedly given to a signal, there is dedicatedly given to the signal, so there is no possibility of the crosstalk. Clear? TDM और FDM का concept clear है? Yes, sir. Okay, so this is the concept of what, this is the concept of the TDM, time division multiplexing. और हम लोग का और जो एक मल्टीप्लेक्सिंग होता है वो है WDM, वो है WDM, wavelength division multiplexing. Another type of multiplexing, that is wavelength division multiplexing. So wavelength division multiplexing closely resembles to FDM, means it is same as that like the FDM, except that
the multiplexing and demultiplexing involves light signals. ये FDM की तरह ही है, सेम एज दैट हम कह सकते हैं कि ये FDM की तरह ही है, बट इधर क्या है कि मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग जो हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होगा, एक जगह में मल्टीप्लेक्सिंग होगा जब सिग्नल्स हम लोगों के पास आएगा और उसको क्या है कंपोजिट सिग्नल बना के एक सिंगल डेटा लिंक से हम लोग सेंड करेंगे, और उसका रिसीवर साइड में क्या होगा, हम लोगों के पास एक डीमल्टीप्लेक्सर प्रेजेंट होगा जो क्या करेगा उस कंपोजिट सिग्नल्स को फिर ब्रेक करके एक एक सिग्नल्स को इंटेंडेड डिवाइसेस के पास सेंड कर देगा जिस सिग्नल्स को जहां जाना था। तो सेम एज दैट ये क्या है कि एफडीएम जो है ये क्लोजली रिजेंबल्स टू एफडीएम, डब्ल्यूडीएम जो है, और इसमें क्या है, इसमें भी मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग होता है, बट ये क्या है लाइट सिग्नल्स के ऊपर काम करते हैं। दैट मीन्स लाइट सिग्नल्स अगर के ऊपर काम करेगा तो हम लोग जानते हैं कौन सा हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया यूज करते हैं। हम लोग को 3 ट्रांसमिशन मीडिया था, इफ यू रिमेंबर देयर आर 3 ट्रांसमिशन मीडिया, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल में क्या था, फाइबर ऑप्टिक केबल में हम लोग क्या था, लाइट का जो ट्रांसमिशन था हम बोले थे कि ये जो है इंटरनल रिफ्लेक्शन इसके ऊपर काम करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, फिजिक्स का थ्योरी। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के ऊपर लाइट का काम करेगा, तो इसीलिए क्या है लाइट सिग्नल्स को ट्रांसमिशंस होता है हम लोग फाइबर ऑप्टिक चैनल को यूज करते हैं। एंड दिस आइडिया इज सेम एज टू कॉम्बाइन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ये तो सेम ही होगा क्योंकि इसमें भी क्या है कि डिफरेंट सिग्नल्स को हम लोग कॉम्बाइन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, एंड फ्रीक्वेंसीज आर वेरी हाई। इसमें क्या है वेवलेंथ डिविजन्स में फ्रीक्वेंसीज जो है या बैंडविड्थ जो है वो वेरी हाई है। तो फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो मतलब क्या है, हम लोग का डेटा रेट, हम लोग का डेटा रेट जो होगा, डेटा रेट ज्यादा होगा। सो इफ डेटा रेट इज हाई then which transmissions media is used for? If the data rate is high then the fiber optic cable is used. So that's why designed to utilize the high data rate capability of the fiber optic cable. क्यों, इधर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा मींस क्या है कि हम लोग का डेटा रेट जो है, डेटा रेट भी हाई होगा। तो डेटा रेट हाई होने के लिए हम लोग कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया यूज करते थे, याद करो ट्रांसमिशन मीडिया के टाइम में तब हम लोग क्या था, हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करते थे। तो फाइबर ऑप्टिक केबल इसीलिए किया कि डिजाइन टू यूटिलाइज दिस हाई डेटा रेट कैपेबिलिटी ऑफ द फाइबर ऑप्टिक केबल। और इधर हम लोग क्या करते हैं कि वेरी नैरो बैंड ऑफ लाइट सिग्नल, वेरी नैरो बैंड ऑफ लाइट सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। सो इधर क्या होता है कि डिफरेंट सोर्सेज, दैट मींस इन द रिसीवर साइड फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेस, light signals, very narrow band light signals are combined to make the wider band of light. So that means how the transmission should be take place, the transmission should be take place if you look carefully, that is here there is in the multiplexer side there is a prism, you can say this is a prism, and there is also a prism in the demultiplexer. So from all the devices the light narrow band of light signals will came, all from all devices narrow band of light signals, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि WDM में क्या है लाइट सिग्नल्स के ऊपर ट्रांसमिशंस होता है, तो दैट मींस क्या वेरी नैरो बैंड ऑफ light signals will come to prism from different devices. You can see from I1 then I2 and I3, these 3 signals came into the prism. अब अगर प्रिज्म जो है उसका फिजिक्स का थ्योरी में याद करो तो उसका 2 प्रॉपर्टीज होता था। उसका 2 प्रॉपर्टीज क्या होता था कि प्रिज्म के ऊपर अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन से कुछ लाइट को दिए तो वो क्या है, वो लाइट बेंड होके निकलते थे, यही था। और अगर कोई लाइट को हम लोग बेंड करके भेजे प्रिज्म के ऊपर तो वो लाइट क्या है, लाइट स्ट्रेट होके निकलते हैं। तो यही उसका प्रॉपर्टीज था। तो मतलब क्या है कि हम लोग अगर बेंड सिग्नल्स भेजे तो वो सिग्नल्स स्ट्रेट होके निकल जाएगा, या हम लोग अगर स्ट्रेट सिग्नल भेजे तो वो बेंड होके निकलेगा। तो इधर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग का मल्टीप्लेक्सर जो प्रेजेंट है, मल्टीप्लेक्सिंग साइड में हम लोग एक प्रिज्म प्रेजेंट होगा। तो हम लोग क्या है वेरी नैरो बैंड ऑफ लाइट सिग्नल्स, वी आर गिविंग वेरी नैरो बैंड ऑफ light signals from different devices. This is the light signal, this is the light signal, and this is also
the light signal from the devices. और ये क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा. ये क्या होगा, हम लोग जानते हैं एक सिंगल डेटा लिंक और सिंगल लिंक के ऊपर से ट्रांसमिट करेगा. तो इसमें क्या है कि हम लोग का जो ये है, ये क्या है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 मीन्स कॉम्पोजिट सिग्नल बनेगा, कॉम्पोजिट लाइट सिग्नल बनेगा. क्योंकि जितना सिग्नल्स मेरे पास आए उतना सब सिग्नल्स को क्या है हम लोग एक साथ मिलके कॉम्पोजिट सिग्नल बना के उसको ट्रांसमिशंस करेंगे. क्यों हम लोग को ऐसे कॉम्पोजिट बनाना पड़ रहा है? क्योंकि हम लोग के पास तो सिर्फ एक सिंगल लिंक है, तो हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते. उस लिंक से ही मुझे टोटल को भेजना है. तो हम लोग को क्या है, उस सिग्नल्स को टोटल में लेके एक कॉम्पोजिट सिग्नल्स बनाना है. और ये क्या होगा, अब टोटल जो था उस टाइम नैरो बैंड सिग्नल्स आए थे. जितना सिग्नल्स था वो क्या था, सब नैरो बैंड्स का था, लाइट सिग्नल्स. अब एक साथ हो जाने से क्या हो गया, वो वाइडर बैंड हो गया. अब क्योंकि हर लाइट सिग्नल्स को हम लोग कॉम्बाइन कर दिए, तो इसमें क्या हो गया, वो वाइडर बैंड ऑफ सिग्नल्स हो गया. तो ये वाइडर बैंड ऑफ सिग्नल्स क्या होगा, हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू सेंड करेंगे. और उधर डीमल्टीप्लेक्सर मेरा प्रेजेंट होगा. ये डीमल्टीप्लेक्सर का काम क्या है, डीमल्टीप्लेक्सर हम लोगों को टोटल इस जो था टोटल इसको डिवाइड कर देंगे. सिग्नल्स को क्या है, सिग्नल्स को अगेन डिवाइड कर देंगे. और जो जो डिवाइसेस में सेंड करना है उस डिवाइसेस के पास ये सिग्नल्स क्या होगा, चला जाएगा. तो मींस फिर हम लोग क्या होगा, ये वाइडर बैंड ऑफ लाइट सिग्नल्स विल बी कन्वर्टेड टू अगेन द नैरो बैंड ऑफ सिग्नल्स, नैरो बैंड ऑफ लाइट सिग्नल्स, एंड इट विल गो टू द इंटेंडेड डिवाइसेस. वही लिखा है देखो कि मल्टीप्लेक्सिंग and demultiplexing of light signals can be done with the help of prism, and one prism performs the role of a multiplexer by combining light having different frequency from different sources, and the composite signal is transmitted through an optical fiber cable over long distances, and at the other end of the optical fiber cable the composite signal is applied to another prism and to do the reverse operation. So this is the what, this is the full concept of WDM or wave division multiplexing. So here in wave division multiplexing all the signals are present of the light signals, and this light signals will be transmitted through fiber optic cable. This light signals will be transmitted through fiber optic cable. और इधर हम लोग को क्या है, दो प्रिज्म है. तो प्रिज्म में क्या होगा, हम लोग नैरो जो है जितना लाइट सिग्नल्स है वो लाइट सिग्नल्स नैरो बैंड लाइट सिग्नल्स विल बी हियर, एंड दिस लाइट signals will be then passed through the fiber optic cable. So here all the light signals are combined. That means what, that means it makes as the wider band signal. And again in the demultiplexer it will be what it will do, it will break them as a normal, and this will again be the narrow signals, light signals, and it will go to the intended devices. So this operations is performed in the WDM. Okay, clear? It is clear to everyone? Yes, sir. Okay. So this is the process of the WDM. Now today we will see another topic, that is what we call CDMA. This concept we call CDMA. You have already familiarized with it, that CDMA you have sometimes you have in the mobiles case you have that in mobile sometime you have this term you have been familiar, that you have sometimes hear this term, that it is called as CDMA mobile. You have sometimes you have you see that now what is CDMA, we will know that what is CDMA. Now the full form of the CDMA is code division multiple access. The CDMA stands for code division multiple access. Now what is this? In this method, in this CDMA method, one channel carries all the transmission simultaneously. तो मतलब CDMA में क्या है, CDMA तुम लोग नाम सुनने होंगे, CDMA बोलते हैं CDMA मोबाइल,
ये हम लोग यूज करते हैं सीडीएमए कम्युनिकेशन ऐसे। तो इसका मतलब क्या है, सीडीएमए स्टैंड्स फॉर कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और ये जो सीडीएमए मेथड है, इसमें क्या है कि मेरे पास एक चैनल है और उस चैनल से क्या होगा, सारा ट्रांसमिशन जो है, सारा ट्रांसमिशन साइमल्टेनियसली हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो एक चैनल प्रेजेंट होगा और उसमें क्या है कि हम लोग साइमल्टेनियसली all transmissions will be done. So CDMA means what? CDMA basically simple, in simple words it means communication with different codes. So इसमें क्या है, हम लोग का कोड्स होता है, कुछ कोड्स, डिफरेंट कोड्स प्रेजेंट होता है। अब इसमें देखो कि हम लोग नॉर्मली जब सिग्नल्स जाते हैं तो हम लोग का ऐसे स्टेशंस रहते हैं, बहुत सारे स्टेशंस प्रेजेंट होता है। जैसे हम इधर एग्जांपल देखिए, जब दिखाएंगे तो हम लोग 4 स्टेशन लेके दिखाएंगे। तो ऐसे हम लोग के पास बहुत सारे स्टेशंस प्रेजेंट है जब सिग्नल्स। तो अभी क्या है, सिग्नल्स स्टेशन 1 से स्टेशन 2 के पास, या स्टेशन 1 से स्टेशन 4 के पास, या स्टेशन 1 से 3 के पास, या स्टेशन 2 स्टेशन 3, all like there all the stations are present, and these stations done what, these stations can communicate with each other through a code. These communications, these stations communicate with each other through the codes. So we will see how these stations are communicate with each other and how this will be performed in the CDMA. So now if here the communication with code takes place, here the communication with the code takes place, if codes are multiplied with each other, then the answer is 0. And if the codes are multiplied by itself, then we get the number of station. So if we see it example, it will be very much clear to you that in this example, you consider, in this example, you can consider that there are 4 stations present. You can see there are 4 stations present. This station 1, this is a station 2, this is a station 3, and station 4. There are 4 stations present, and each station has a code. Each station has a particular data, and each station has some code. So for station 1, the code is C1. For station 2, the code is C2. For station 3, the code is C3. For station 4, the code is C4. And each station has a data. That is what each station's data is also different. Now, for station 1, the data is what? The station 1 for data is D1. For station 2, the data is D2. For station 3, the data is D3. And for station 4, the data is D4. So, अब हम लोग जो कंडीशंस देखे थे कि अगर हम लोगों का जो कोड्स है, अगर हम लोगों का जो कोड्स है कि हम लोग देखेंगे कि कम्युनिकेशन विद कोड टेक प्लेस उसके टाइम में, कि कोड्स जो है वो अगर डिफरेंट कोड्स मल्टीप्लाई करेगा तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 0 होगा। और सेम कोड्स के अंदर अगर मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो वो कोड क्या बताएगा कि जितना नंबर ऑफ स्टेशंस मेरा प्रेजेंट है वही। तो इधर क्या है कि हम लोग देखें कि टोटल हम लोग जितना क्या है C1, C2, C3 एंड C4, ये टोटल कोड्स है स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3 एंड स्टेशन 4 का। तो अब क्या होगा कि सेम अगर डिफरेंट कोड्स को हम मल्टीप्लाई किए, दैट मींस इफ वी मल्टीप्लाई कोड 1 इनटू कोड 2, तो इसका क्या है, डिफरेंट कोड्स का अगर हम मल्टीप्लाई किए, दैट मींस द आंसर विल बी व्हाट, द आंसर विल बी 0। बट if we multiply the same code, if we multiply the same code, then the number of station present, it will be given. So here we are seeing that it is given 4. That means because we have 4 station present here, तो 4 stations में क्या होगा, तो इसलिए क्या है 4 stations हम लोग को दे दिए हैं। तो अब देखो कम्युनिकेशंस कैसे होता है कि हम लोग का स्टेशंस जो है, स्टेशंस में क्या है कि हम लोग का स्टेशन D1 कोड जनरेट किए, D1 डेटा को है और C1 कोड जनरेट किए, तो इसका टोटल क्या होगा C1 into D1, same as that station 2 generates D2 and it has a code C2, so the total will be what, C2 into D2। same as that हम लोग का ये जो है स्टेशन 3 जो है, स्टेशन 3 का क्या है, स्टेशन 3 का हम लोग का डेटा है D3 एंड कोड है हम लोग का C3।
So total it will be C3 D3 and same as that station 4 जो है station 4 हम लोगों का क्या है total data है D4 and code है C4 तो इसका क्या होगा total multiplication C4 into D4 तो ये क्या होगा sending side में होगा अब sending side में total हम लोग के पास कितना मिला C1 into D1 C2 into D2 C3 into D3 and C4 into D4 तो ये मेरा टोटल स्टेशन से क्या है टोटल स्टेशन से मुझे मिला कि कोड और डेटा जो है सब मिला है तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको एक चैनल से सेंड करेंगे रिसीवर साइड में तो रिसीवर साइड में क्या है ये जो टोटल है रिसीवर साइड में ये टोटल ट्रांसमिशन होगा तो रिसीवर साइड में क्या होगा इसका टोटल ट्रांसमिशन होगा तो देखो ये क्या है कि सिंगल लिंक है देखो ये वन सिंगल लिंक this total will be transmitted so that means C1 into D1 plus C2 into D2 plus C3 into D3 plus C4 into D4 so total transmissions will take place total जितना मेरा कोड्स और डेटा मिलके हुआ ये टोटल क्या होगा ये टोटल उस सिंगल चैनल से सेंड होगा आज हम ये नहीं दिखा पाएंगे कि कैसे हम लोग का स्टेशंस का बीच में कम्युनिकेशन होता है मतलब स्टेशन 2 अभी क्या है स्टेशन 2 wants to hear what station 1 says कि स्टेशन 1 के पास क्या उसके पास डेटा है वो स्टेशन 2 जानने चाहते हैं तो वो कैसे जानेंगे इस सिंगल चैनल के जो डेटा हम लोग डेटा कोड सेंड किए हैं उससे कैसे जानेंगे ये स्टेप्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ठीक है ओके सो टुडे इट विल बी टिल नाउ and if there is any question you can ask there is any question till now there is any question Afrin Ujjal No, sir. clear है अभी तक Yes, sir. okay so I will today the time is so less and that's why I will not able to show it but in the next class I will again comes from there and I will explain it okay that till now you know that all that these are using a signal using the single channel this will be transmitted to the receiver side now how the stations 2 we can see the stations 2 or a station 3 how it can listen what means listen that the station was at what data in the station 1 will present it will be done some in how a mathematical calculation it will be done we will see that and I will explain it okay so till now today it is up to here so everyone it is requested everyone to scan the QR code and give your attendance and if you think that any portion you have any question then you can ask okay and this is the QR code so after scanning of all student then I will stop the session so please inform me about that you scan the QR code or not तो QR कोड स्कैन कर लिए सब लोग
सब लोग QR कोड स्कैन किए? Yes, sir. ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक? प्रीति, दोनों ही प्रीति और सावन, शीतल, किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? No, sir. No. So okay, then thank you everyone. I am ending the session. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, thank you everyone.